Okay. Bismillahirrahmanirrahim, students. So this is your English A lecture. In English A, we have two books. The first one is a novel that is Tales from the Arabian Nights. It's the smallest small book, a colorful picture book. We have different stories in the book. The novel is Tales from the Arabian Nights. Okay? And the second book we have is our workbook, that is English Literature Workbook. So novel may we just do the reading, we will do the reading, and in the workbook we will solve the exercise. We will do the question answers, we will do the sentences and the words meaning and the other book work on the workbook. Okay, this is for English A. We have two books. The first one is the novel and the second one is the workbook. Okay. सो अच्छा, अब आप सबने होमवर्क तो अपने कलेक्ट कर लिए होंगे ना. अब जो आपको पास होमवर्क दिया हुआ है स्टूडेंट्स, उसमें आपने क्या करना है, यू कैन डू इट ऑन योर वर्कशीट्स एज वेल एज यू कैन फोटोकॉपी, यू गेट द फोटोकॉपी ऑफ दीज यूनिट्स. जो जो आपको काम दिया हुआ है ना, आप उन यूनिट्स की फोटोकॉपी भी करवा सकते हैं वर्कबुक से. ठीक है. एंड डोंट राइट एनीथिंग ऑन योर वर्कबुक. जब तक आप लोगों को स्कूल की तरफ से अलाउ नहीं किया जाता, मैं डोंट राइट एनी thing on your workbook. Don't solve on the workbook. Just do it on your loose sheets, or you can do it on the photo states. आप इंग्लिश ए और बी जो भी आपका काम है, आप उसको फोटोकॉपी करवा लें. एक एक यूनिट है ना अभी इंग्लिश ए और बी का, तो आप उसको फोटोकॉपी करवा लें वर्कबुक में से, क्योंकि वो अभी तो अनसॉल्व्ड है आपकी वर्कबुक में. आप उसको वहां से फोटोकॉपी करवा लो और उस पे सॉल्व कर लो, अगर लूज शीट्स पे नहीं करना तो. लेकिन डायरेक्ट वर्कबुक पे आपने अभी नहीं करना. ठीक है. So without wasting our time, let's start the reading. Our first story from the novel, that is The Unhappy King. It is a story. First of all, tell me the tales of the Arabian Night. What is a tale? Tale means the stories. Okay? Tales means the stories, or tales from the Arabian Nights are the stories from East or from the Middle East people. यानी कि आपके पास जो वो ईस्ट के लोग थे और जो मिडल ईस्ट के लोग थे, ये उनकी स्टोरीज हैं. ठीक है. और you know the tales were told but and retold thousands of years ago. मतलब चलती जाती हैं इस तरह से स्टोरीज ये. and they were told and retold from thousands of years ago. कई सालों से सुनाई जा रही हैं, फिर और आगे सुनाई जा रही हैं. इस तरह से ये स्टोरीज चलती रहती हैं. ठीक है. और बहुत सी लैंग्वेजेस में भी ट्रांसलेट होती हैं. अब ये क्या है जो हमारे पास स्टोरी है, टेल्स फ्रॉम द अरेबियन नाइट्स आर द स्टोरीज विद इन अ स्टोरी. इस पूरी हमारे पास जो स्टोरी है, इसमें डिफरेंट स्टोरीज हैं अबाउट अ क्रूल किंग. ये पूरी हमारे पास जो स्टोरीज हैं, इट इज अ स्टोरी ऑफ अ क्रूल किंग, दैट इज किंग शहरिया. ठीक है. अब ये क्या है कि इसमें व्हाट इज इन द स्टोरी, द अनहैप्पी किंग, व्हाट इज इन द स्टोरी. ओके, द अनहैप्पी किंग. ठीक है. इसमें हमारे पास है द किंग नेम इज शहरिया. The king name is Shahriar, and what did he do? He marries beautiful women. He always marry beautiful women. Or why? But उसको क्या करता है? He always has their heads cut off in the morning. शादी करता है और अगली सुबह को वो उन सबके सर काट देता है. Why he did do this? क्योंकि ओके, वी विल डिस्कस इन द स्टोरी. सब कुछ हम ये स्टोरी में डिस्कस करेंगे कि अनहैप्पी किंग की स्टोरी क्या है. सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. अभी सबसे पहले हम रीडिंग करते हैं. ठीक है. उसके बाद यू हैव टू रीड इट ऑन योर ओन. आपने इसको खुद से भी रीडिंग करनी है और मैं इसको क्लास में भी रीडिंग करवाऊंगी. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल डू द रीडिंग, देन वी विल सॉल्व द एक्सरसाइज, और तभी आप उसको अपनी फोटोकॉपीज पे या लूज शीट्स पे आप सॉल्व करेंगे. वर्कबुक पे आपने कुछ भी सॉल्व नहीं करना है अभी. ओके, द फर्स्ट स्टोरी इज द अनहैप्पी किंग. The king wants a wife.
Long ago, there was a great king called King Shahryar. What is the name of the king? Shahryar. Again, repeat it with me. The name of the king is Shahryar. He was a good king. वो एक अच्छा किंग था, ग्रेट किंग था, और किंग का नेम क्या था? शहरिया. और क्योंकि इट्स नेम ऑफ द किंग, नेम ऑफ अ स्पेशल पर्सन, ऑब्वियसली नाउन है, नेम है, नाउन है, लेकिन इट्स अ नेम ऑफ अ स्पेशल पर्सन ना, एक स्पेसिफिक पर्सन को रिलेट कर रहा है, तो यू विल राइट इट विद द कैपिटल लेटर because it's a name. He was a good king until he found his wife loved another man. बहुत अच्छा good king था, लेकिन his wife cheated on him. Then the king was very angry with his wife. Um, then the king was very angry with his wife. Cut off her head. He roared. अब उसने क्या किया? When he caught her wife cheated on him, he roared to cut off her head. Cut off her head means like to be head, यानी कि उसका सर कलम कर दो, सर काट दो. He roared, he shouted, वो चिल्लाया कि cut off her head. The executioner. Students, wait for a minute. The executioner. Executioner is the person whose job is to execute criminals. मतलब एक ऐसा person जिसकी job है कि criminals को सजा दे, उनको उनका सर काट दे, या उनको किसी तरीके से hang कर दे, किसी भी तरह से, ठीक है. Executioner is the person whose job is to execute criminals. मुजरिमों को सजा देने वाला person, ठीक है. The executioner took off the king's wife away and cut her head off. Executioner ने क्या किया? King's wife. King's wife means it's the possessive case, the wife of the king. You can see the use of the apostrophe sign, possessive case. The executioner took the king's wife away and cut her head off. Executioner king's wife को ले गया, wife of king. King's wife means the wife of the king. Or cut her head off. Now what happened next? Every night after that, the king lay in his great bed all alone and very sad. Obviously, he wants a company. So when he lay on his bed, he was very sad and lonely all the time. And when he slept is the form of second form of sleep. Sleep, slept. When he slept, he dreamt. Dreamt again is the form of the dream. ठीक है. When he slept, he dreamt of his beautiful dead wife. जब भी वो सोता, he dreamt, वो ख्वाब देखता, of his beautiful dead wife. Okay, here dead is the, you can say it's an adjective. Wife को describe करे ना. Beautiful is an also an adjective. Beautiful and dead wife. Beautiful and dead are describing the wife, कि उसकी wife कैसे थी? Beautiful थी, लेकिन dead थी क्योंकि उसने उसका सर कटवा दिया था. So these are the adjectives. When he was awake, he thought he could see her in her arms of other man. He did not know what to do. At last, he called for the wazir. Who is the wazir? The chief of his servant. But who is the wazir? The chief of his servants. यानी कि उसके सारे सर्वेंट्स का जो चीफ था, निगरान था, जो उनका सुपरवाइजर था, that person is called वजीर.
Wazir, we will also write it with the capital letter. Chief of the servants, or servants की spelling में बेटे SERVANTS. It's a common mistake. We used to write it VENTS, but it's servants, SERVANTS, servants. Okay. The sleepy wazir, okay, you can see in the picture, the executioner was taking the wife of the king. Executioner means a person whose job is to execute criminals, यानी कि मुजरिमों को सजा देने वाला person. ये इसने उससे उसका सर काट दिया. The sleepy wazir hurried to the king's room. Hurried means rushed towards the king's room. You can say again, here is a possessive case. King's room. King's room means the room of the king. Possessive case है, it shows the possession. जब भी आपको इस तरह से word लिखा हुआ दिखाई दे कि ऊपर हमारे पास छोटा सा just like a comma इस तरह का sign है और उसके आगे s लगा हुआ है, it means it's showing the possession. King's room यानी कि possession show कर रहा है, room किसका है, king का, the room of the king. I will not spend another night by myself, said the king. अब king क्या है? He was very lonely. He was feeling very lonely and sad. And whenever he wants to sleep, he dreamt of his beautiful dead wife, or in a daytime, he just imagined his wife with another man. So he was very in a bad situation. और he said that I will not spend another day by myself, कि मैं एक और दिन भी अकेले नहीं गुजार सकता, इस तरह से नहीं गुजार सकता. Oh, you have decided to marry again. अब वजीर क्या समझा कि you have decided to marry again, कि आपने decided like you choose. Decide means to choose, कि आपने choose किया कि आप दोबारा शादी कर रहे हैं. I'm glad, so glad, dear king, cried the वजीर happily. Happily. अब आप देखो ये आपके it's the adverb. Happily क्या है? It's an adverb जो हमारे verb को define कर रहा है. Marry again? How can I do that? Women are so bad. A woman cannot love one man for more than one day. What's the point of view of the king? He's saying that women are so bad, or women cannot love one man for more than one day. Okay. We will stop our reading from, we will continue our reading from here tomorrow, inshallah, okay? Because it's our first day. So if you have any question, you can ask me.